Lakshmi, sip Girish, sip Rumataji, sip Rajendra ji, sip Sudeep, sip Shair Rajesh, sip Sagai, sip Kaumudi, sip Atmatray, sip Krishna, sip Ganesh. Welcome to the call, Ganesh. Sip Rutanu, sip Chidanand, sip Chandra, sip Pankaj, sip Vanita, sip Eru, sip Rekha Parvani. And the rest of you who are still coming onto this call, I welcome you to the call, Administrator. The subject is a very interesting subject today, right? Let me see how many of you can reach the answer. What is our greatest sin? So first of all, maybe you could tell us what are the sins you know of, and then what is our greatest sin? Come on, who's going to go? Who is going to go? Vanita. Yes, Vanita, what is our greatest sin? Vanita, unmute, please. Unmute, please, Vanita. Vanita, unmute. Please unmute and speak, Vanita. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Please speak, Vanita. Yeah. Our greatest sin is I remember that I am the body and mind. Arey, what a beautiful And because of that, we make all sins rise out of that only. Very nice answer. I'm not going to give out the answer like I told because everybody must try to get answer. But thank you for starting the day with a wonderful answer. Let me see our next master, Krishna. What Krishna tells us. Krishna? Yeah, good evening. So almost similar answer. I was thinking we forget to realize that we are that Satchit Anand Atma, and so we live a life of unhappiness. That's our greatest sin. You know, all of you are so advanced masters. I become inferior. So you all give such good answers. So I was expecting you all to say our greatest sin is lust, greed, anger, hate, revenge. You all are giving all high-level answers. So the first one, Vanita said, I remember, our greatest sin is that we think we are the body and mind. This is what I think Vanita said. And Krishna said our greatest sin is we forget that we are Satchidanand Atma. This is what we don't realize that we are that Satchit Anand Atma, so we become unhappy. Okay, good answer. Thank you. Let me see. Lakshmi, Samatma, Yogini, Rutanu. Lakshmi. Shivoham, sir. Shivoham. Sir, we are not realizing. Veena. What? For what we have born. We have to realize. Is that the greatest sin that we are not realizing? Yes, sir. If you are not realizing, then again we have to give rebirth. The cycle will go. So now you're giving it. Our greatest sin is rebirth. Our greatest sin is ignorance, which leads to rebirth. Correct? Yes, sir. Good. Very good. Let me see who is going to and let the answer get enhanced. Samatma. We're having what an amazing session start. It's like a great marathon. In Bangalore yesterday, they had women's marathon. So we've got already the women marathon has started here. 1, 2, 3 women. Yes, Samatma, 4th, 5th, 6th. All women today are taking the front stage. Yes, Shivam. A greatest sin is being in mind state because of ignorance and allowing our mind to be the boss, because all other sins are committed because of the mind. Beautiful. Our greatest sin is to be in the state of mind. And I'm adding to what Samatma said, because the mind makes us blind and commits all the other sins. A greatest sin is to be the mind which makes us blind, which commits all the other sins. Beautiful. Yogini. Thank you. Shivam, sir. Shivam, yes, Yogini, bolo. Yeah, my answer is also, it's the ignorance. My own ignorance is the biggest sin. Good. I like the answer in one word. Our greatest sin is ignorance. Sometimes one word answers are beautiful. Our greatest sin is ignorance. Beautiful. Ruth Anu. Today Sudeep is coming after a long time coming to bat. Normally Sudeep is in the pavilion. Today Sudeep is bat. Okay. Ruth Anu and then Sudeep. Shivam, जोर से बोलो. गुरु जी, जब हम भोगा में चले जाते हैं योगा छोड़ के,
वही हमारा greatest sin है. Okay, good, beautiful. I love the answers today. Today, I looks like all of you have had some Johnny Walker or something. I don't know what, or you've had some sip Walker, because your answers are so amazing. Each answer is better than the other answer. So she says our greatest sin is to live in bhoga and not in yoga. Beautiful, beautiful. Sudeep Bhargava, and then we have a newcomer. I think Ganesh first time is coming on the call, I believe. But Sudeep Bhargava. Thank you, Guruji. Thank you. Guru Sudeep. So for me, Shivam sir, Shivam, the greatest sin for me will be the ignorance about ignorance. Because it's only when we become aware of our ignorance that we can take some steps towards it and then stop the cycle. But that doesn't happen. Very good. Our greatest sin is being ignorant of our ignorance. And then that leads to everything else. Lovely. Very good, Sudeep. Ganesh, how did you come to this call? First, tell us, is it the first time you're coming or you have attended before? First time. Namaskar. Okay. So what is your question, Ganesh? बंगाल से हूँ सर. बंगाल से आ रहे हैं, बंगाल से. जी सर. कैसे आए? किससे बताया कॉल के बारे में? कॉल के बारे में सर मैं तो ऑनलाइन दिखा था. ऑनलाइन, ठीक है. ऑनलाइन मैंने फिर फोन आया था. अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर अभी ये तो चारों तरफ घूम चुका हूँ. मतलब जो शांति जो चीज है वो चीज मेरे को मिल नहीं रहा है. तो फिर मेरे अंदर ना नेगेटिविटी ज्यादा है. मतलब सारे जगह मैं घूम चुका हूँ. पता है क्यों? जी सर. क्योंकि आप सामने पीछे दाएं बाएं घूमे. करेक्ट? जी जी. चारों तरफ गए आपने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों तरफ आपने घूमे, शांति नहीं मिला. क्योंकि शांति तो आपके अंदर है. शांति तो आपके अंदर है. किधर भी जाने का जरूरत नहीं. यू हैव टू. नेट खत्म हो गया प्लीज सर. हाँ, आपका नेट वीक है ना, सुनाई दे रही है? हाँ मैंने बताया था. हाँ सुनाई दे रहा है सर. मैं बताया था कि नेट आज खत्म हो गया, मैं कल मिलेंगे फिर भी. अच्छा, कल आ जाए, कल आना. ठीक है. He's going to come back tomorrow. आत्मत्रय. Shivam sir. Shivam sir, आत्मत्रय बोलो. Sir, in Bhagavad Gita, Arjuna said I will cut the relatives. It will get very hard, most sin. But Krishna said, you are a divine instrument. As when you live as a divine instrument, there is no sin to you. Good. So what is the greatest sin, Atmatraya? Ego. I am doing, it is the main reason of sin. Very good answer. But what you gave example could be leading to much more deeper answer. Okay. Thank you. You will let us see what comes across. Okay. Sukeshini. Yes, Sukeshini, unmute. And after Sukeshini, we have Rajesh Shire and yes. Hello, good evening, sir. Good evening, Sukeshini. So actually the question and the visual which you shared on the group, that itself somewhere gave this key. There is ignorance of the thoughts, what we means in the subconscious, we are thinking we are body, and somewhere ignorance is there. Not somewhere, it's ignorance throughout, not being a soul, and that is how we are creating that is the greatest sin. And we are going on manifesting so many things that we are creating a rebirth. Very good, very good. Our greatest sin is, again, you are saying ignorance about the ego, and therefore our greatest sin is that we are born again and again. Thank you, Rajesh Rao. Shivam sir. Sure, sir. Whatever the answers which I heard, I am very happy about that, sir. अच्छा. But then अब कुछ अलग तो बोलना जरूरी बनता है ना. हाँ बिल्कुल. शायर तो शायरी करेगा ना. So that आपने पूछा sin, SIN. Correct. Greatest sin is, इसको उल्टा पढ़ना है सर, NIS. Not identifying sip in me and all. Arey, beautiful. Now, what a beautiful answer. What a beautiful sin is. The greatest sin, SIN, is NIS.
not identifying SIP. अरे क्या शायरी इसको बोलते हैं ओरिजिनल शायरी. ये तो क्या बॉलीवुड के शायर को गोली मारो यार. The greatest SIN is NIS. देखो क्या creative answer दे दिया हमारे शायर ने. ठीक है. Very good. Very good. Very good. Very good. Ashok Nichani, what are you going to say, Ashok Nichani? Shivam Sarji. Shivam, bolo Ashok. Sarji, I joined little late. I don't know whether anyone has given this answer. Killing of the animals. Is the greatest sin. Greatest sin. Cow. Okay. So Ashok, I'm. It is of course I am with you because our Guruji says that same thing, but I will not elaborate on that. Those who feel it will feel it's a sin. People who eat non-vegetarian, Ashok, on this call, there may be people who are eating non-veg, they think it's not a sin. There are many other sins, Sarji. Disrespecting the Guru. It's a very big sin. See, Ashok is coming with some practical sins. Like Mahatma Gandhi spoke about the 7 deadly sins. Have you heard Mahatma Gandhi's 7 deadly sins? Okay, good Ashok. Rumata ji, आपको क्या बोलना है Rumata ji? सबसे बड़ा पाप क्या है? Guruji, pranam Shivoham. Pranam. Guruji, I am with Samatma. There are weak moments when we allow our mind to become our king and we become slave of the mind. And secondly, second point is, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें सिर्फ प्रभु चाहिए, हमें प्रभु ही चाहिए, ये चाहिए, वो sin है. I like this. Rumata ji बोलते हैं ये biggest sin is ये भी वो भी लोभी हो गया ना, ये भी वो भी लोभी. Yes, Guruji. Okay, good answer. Girish and Chidanand. Girish. प्रभु को बोलना. अरे wow. Sip on lip. Wow. This is what my Guruji's last words to me. What is our greatest mistake in life? Guruji said, our greatest mistake in life is forgetting SIP. Our greatest mistake is forgetting SIP, forgetting the divine. And some people are so busy in other things, they forget SIP. They forget the divine, some people. This is the biggest sin. And the greatest strength is ever connected to SIP. I never forget my divine even for one moment. I never forget my divine even for one moment. If I'm having coffee also, I think of my divine. If anything I do, I'm thinking of divine. I don't forget the divine. What a beautiful answer. Thank you, Girish. Chidanand and Krishan. Shivam Guruji. Yes, sir. Yeah, I was also about to say the same thing, forgetting divine, which actually Rajesh Shire also said the same thing, not identifying SIP in one and all. Basically forgetting the divine. Today the greatest sin. Today we have amazing answers. I have got a little twisted answer. I'll tell you what SIP has given me. But you have given today amazing answers. I mean, one of the best sessions. I have not had such a fantastic session. Krishan? Shivam, sir, according to me, we are divine instrument. We forget this thing. This is our biggest sin. We are divine instrument. We forget that we are the divine instrument. काश आप एक कदम आगे जाते. क्या आंसर दिया आपने? आप एक कदम आगे जाते तो स्वर्ग पहुंच जाते. क्या आंसर दिया आपने? Let us see. Krishan, who's this QWERTY? AB? QWERTY? Please ask QWERTY. QWERTY. Your name is QWERTY, but please unmute. QWERTY, unmute. You'd like to ask something? Hello. Hello. Yeah, yesterday I was walking on Church Street and I got a ball from you. Yes. And and it really made my day. And I saw it had your name, and I went. I also messaged you personally, but you didn't see that. Also, this I went to some of your videos. It really it was nice. It was nice seeing them, and also the answer for me today. What is my what according to me is the greatest sin? I feel greed.
Greed is it leads us to selfishness. And so I feel greed is a greatest sin. Very good. So what's your name? It's Anushka actually, but I kept some other No thing. problem. So Anushka, if you come on this call every day at 8 o'clock, you will find very interesting question and answers. Whenever you're free, please come Yeah. on the call at 8 o'clock and I will add you to the broadcast. Okay? Yeah, I will, sure. I will reply your message. Thank you for joining us. Have a happy Yeah, day. thank you. Thank yeah. you. Thank you, Anushka. Yeah. Rekha? Rekha, Sure. bolo. We never try to know who is God and where is God. ये भी बड़ा पाप है. Huh? I read शायर, I read a quote somewhere. I'm not able to find that quote शायर. ये शायर वो क्या कुछ शायर, if you can find it, I'm giving you a challenge. ये quote ऐसा है, देह को जो देह समझे, ये सबसे बड़ा पाप है. देह को जो, I think देह को जो खुद समझे, I don't have the exact words. देह को जो देह समझे, ये सबसे बड़ा पाप है. पापों के पाप पे ये पापों का बाप है. So this is one shair, one I forgot in Rishikesh some 20 years back in some ashram. But you find, because you're a shair, you will find it and you will bring it back. समझ गए ना क्या point क्या है? देह को जो खुद समझे, ये सबसे बड़ा पाप है. पाप तो बहुत है, ये पापों का बाप है. So this is what I want you to bring back. Thank you, Rekha and shair. Vijay Kumar, Rekha Parwani, Rajni. Vijay Kumar. Namaskar, Guruji. Yes, namaskar. Bolo, sir. Namaskar, everyone. The greatest sin is that I am blind, but I am very much eager to lead another blind in the jungle. Good answer. Very, very good answer. Vijay Kumar. Rekha Parvani. We are blind and we want to lead other blind. The blind leading the blind. Rekha Parvani. Thank you. Shivoham Air. Shivoham. Everyone has completed many points. I just want to add one main point, that we are wasting a human birth. Wasting a human birth. Beautiful answer. Continue. So this is our biggest sin because we don't know if we get another chance. What a beautiful answer. What a beautiful answer. The greatest sin is to wasting this human birth because we may never get this chance again. What an answer. Rajni and then Ganesh is back. Rajni, unmute. Yes, Rajni. Sir, I don't know greatest sin. I want to talk to you. That's why I raise my hand. हाँ बोलो. Sir, I want initiation from you. हाँ जी. I want initiation from you. You are already initiated by coming on this call. I am already initiated 13 years back, but I want initiation from you. If I am satisfied, I want to change. So to be initiated, if you want me to initiate you, for me, initiation means helping you start the journey. So you have you got my number? You have my WhatsApp number? Yeah. You WhatsApp me and I will guide you on how to start the journey. My way of initiating somebody is not a complicated method. It's a very simple method. But you WhatsApp me and I will guide you the way forward. Okay? Okay. Thank you, Rajni. So, Ganesh. Yes, Ganesh, आपको कुछ बोलना है? मैंने आंसर सुना आपने? मेरा आंसर सुना? हाँ, नहीं सर, उस टाइम तो नेट मैंने फिर रिसर्च किया. तो आप बोले आप शांति के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं, शांति नहीं मिल रहा है. तो मैंने बोला आप कश्मीर जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं और वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. लेकिन आपकी गलती है, आपको शांति चाहिए तो अंदर जाओ. चारों तरफ मत जाओ, चारों तरफ मत घूमो. चारों तरफ घूमेगा तो मेरी गो राउंड में घूमते जाएगा, शांति नहीं मिलेगी. ठीक है, समझे आप? शांति के लिए का मतलब क्या है? शांति से मिला क्या हंसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद. इसको बोलते हैं सच्चिदानंद. हाँ, और शांति चाहिए तो पता क्या करना है? पता है? मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है,
डर और चिंता में हमें डुबाता है, मन को है मारना दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। तो आपको मन को मारना है और उसको चारों चारों तरफ घूमना नहीं। आप ये कॉल पे आओ, जब भी आपको नेट मिलता है कॉल पे आओ और डेली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे कॉल पे, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत यहाँ पे बहुत मास्टर है, और बहुत गुरु है कॉल पे। हाँ बोलो। ओके कृष्ण। सर सड़क में जाने का एक स्टेप और करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बोलो बोलो कोशिश करो। Not realizing that I am a ship due to ignorance, I am not able to realize realization of self and God. This is the biggest sin. You are 99% right now. I like this idea. आपने पहले क्या बोला आंसर? जब मैं बोला स्वर्ग के लिए एक step. We forget we are divine instrument. Yeah, this is Christian. Today Christian gets a special salam from me. Special, sir. The answer is this, my dear friends. Very close to Christian's answer, but I'm giving you the answer. Our greatest sin is living as man. Our greatest sin is living as man when we are God. Our greatest sin is living like man when we are God. Our greatest sin is living as human when we are divine. Our greatest sin is this. Huh? Our greatest sin is to live an earthly life when we are a heavenly being. This is the greatest sin. You are God. You are SIP. And what close answers? What did Rajesh say? Rajesh said SIN. Very close to exactly what I said. But Rajesh's word, it is SIN is NIS. Not identifying or not always being in connection with SIP. I only changed the words slightly, but these words came to me from SIP. And then I'm repeating in one line. Our greatest sin is living as man when we are God. You are God. Huh? Imagine if Eru lives as Ruchika Singh. If Eru lives as Ruchika Singh, that's a sin. She is Eru. She is the Atma. Correct? If Samatma lives as Samitha, if she lives as Samita, it's the biggest sin. She is Samatma. If Atmatra starts living as Dattatre, that is the biggest sin. If Yogini starts living as Komal, it is the biggest sin. If Bliko starts living as Bharat, there can be no greater sin. If Sunil Chittal starts living as Sunil Chittal and not as Chidanand, there can be no greater sin. If Ru Tanu lives as Tanu, if Ru Mataji lives as Kiran Kathuria, this is the biggest sin, my dear friends. Our biggest sin is living as man when we are God. I hope you realize this. The biggest sin for me is living as Ravi when I am air. I am the Atma in Ravi. But the biggest sin is not just being air, but living as SIP. And today's take Krishan and Shair Rajesh, because he said a beautiful answer. He said the greatest SIN is NIS. Not being. I क्या बोला आपने? Not what is the Shair? NIS क्या बोला आपने? Unmute. हाँ Shair. Sir. Not identifying SIP in me and others. So our greatest sin is not identifying SIP. I'm saying one step further, Shair. Our greatest sin is living as man when we are God. अरे हम तो प्रभु है ना, हम क्यों भूल जाते हैं हम प्रभु हैं? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? Can there be a bigger sin that you have forgotten you are divine? Hello, you have forgotten you are divine. Hello, wake up.
You are divine. Why are you living? Why are you living an earthly existence? You are God. You are SIP. This is the biggest sin, my dear friends. We have got Keshav and Ashok. Yes, Keshav. शिवम गुरुदेव, Shivam, sir. हम अपने अंदर के भगवान को कैसे जाने, कैसे जब उन्हें रियलाइज करें? मैं आपको आंसर देता हूं, जब आपको अपने अंदर भगवान को जानना है, पता है क्या करना है? आपको एक शिल्पी की तरह बनना है। शिल्पी क्या करता है? The sculptor takes a piece of marble और वो जो बकवास के चिप्स है वो निकालता है। मार्बल के अंदर मूर्ति है। शिल्पी मूर्ति नहीं बनाता है। पत्थर के अंदर ही भगवान है, वो सिर्फ उसको चिप करता है, चिप करता है। आपको अविद्या को चिप करना है, मिथ्या को दूर करना है, मिथ्या को निकालना है, अविद्या को अज्ञान को निकालना है। जब आप जो आप चीज अलग घटिया चीज को निकाल देंगे, अंदर भगवान ही है। अगर आपको जो बाहर का इंसान है, वो बाहर का इंसान को छोड़ेंगे, तन मन अहंकार जो छोड़ेंगे, तो अंदर भगवान ही है। पर गुरुदेव, आपके बारे में पढ़ रहा था, जैसे आप 40 इयर्स तक बिजनेस में थे, तब आप पहले खुशी की तलाश में थे, फिर आप उसमें जब मतलब तृप्ति की तलाश में थे, फिर आप मुक्ति की तलाश में गए थे, जैसा मैंने पढ़ा आपके बारे में। सडन चेंज जैसे आपकी लाइफ में आया, व्हाट डिड यू डू टू? एक्चुअली मैं बहुत भगवत गीता पढ़ा, आपको भी बहुत सुना है, तो आई नो वी आर सोल, गॉड इज विद इन अस, वी आर बोर्न बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मा। वो जब तक हम एज सोल कर्म नहीं करेंगे, वो कर्म काउंट होंगे, चाहे अच्छे भी हैं या बुरे भी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इस सबसे आगे कैसे बढ़े गुरुदेव? कैसे रियलाइज हो? अंदर ध्यान भी नहीं लगता इतना, मतलब जो पढ़ा लिखा है उससे नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा गुरुदेव। आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई एम लाइक गेटिंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट। Don't struggle and don't talk of depression. Don't remove ये शब्द को आज से कैंसिल कर दो, ये शब्द को डिलीट कर दो। देखिए, if you want to be in a state where you want to reach mukti and जो आप बोल रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको योग में रहना है। और भगवत गीता में 4 योग के बारे में जिक्र है, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। लेकिन मैं आपको 5वां योग बोलता हूँ, प्रेम योग। तो there are totally 5 ways of remaining in योग। जो योग में रहता है वो डिप्रेशन या भोग में कभी नहीं जा सकता है। हमें योग में रहना, मतलब प्रभु के जो योग में है रहता सदा, संसार के भोग में वो ना है फंसा, आनंदा के सागर में जीता वो है। आपको आनंदा के सागर में जीना है, उसके लिए योग में रहना है। क्या करना है आपकी जिंदगी में? आप बहुत एडवांस है, आप जो बातें कर रहे हैं, यू नो मच मोर देन मेनी पीपल, करेक्ट? आप सुबह को ध्यान योग में रहिए, अपना जो भी कर्म करते कर्म योग में रही है, भक्ति योग कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, और हर इंसान को भगवान समझ के प्यार कीजिए। आपको पक्का गारंटीड कुछ ही दिनों में आप आके यहाँ पे नाचेंगे, आप बोलेंगे मैं हो गया, मुझे एहसास अनुभूति हो गई। ये कॉल में बहुत लोगों को अनुभूति हो रही है, थोड़ी अनुभूति हो रही है। ये कंप्लीट, अगर दिस वीक वी आर टॉकिंग विद ऑन दिस फ्राइडे, वेरी इंपॉर्टेंट 8 स्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये फ्राइडे को हम बात कर रहे हैं द 8 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। केशव, आपको मिस नहीं करना है फ्राइडे का कॉल 7:30। ये जो रास्ता है प्रभु के पास पहुंचने का, मुक्त होने का, अनुभूति होने का, the way to liberation, the way to realization is the way, it's called the 8 stages of spiritual awakening। ये क्या ना, प्रॉब्लम क्या है? हम कुछ शास्त्र में अटक जाते हैं, कुछ यकीनों, कुछ बातों में हम बिलीव करते हैं, कुछ शब्दों में हम यकीन रखते हैं, हम अटक जाते हैं। हमें अटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं है, हमें अटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं है, हमें योग में रहना है। तो केशव, you please continue on the call and you will find the answers. Okay, केशव? Okay, गुरुदेव। ये पकने के लिए कभी-कभी, like I told you today, मूर्ति तो अंदर है, हमें जो बकवास है वो निकालना है, पीस, जो एक्स्ट्रा पीस निकालना है। इंसान के अंदर ही भगवान है, आपको यकीन हो जाएगा। Just keep at it. Just continue being on
being focused on this, and you will get there. You from today onwards, you are going to go forward, no backward. आगे ही जाना आज से. Okay, Gurudev. Thank you. Thank you, Ashok Nichani. Shivam Sirji. Shivam sir. Sirji, 2 lines of one of your old bhajans. Yes sir. तुमने ही जन्म दिया तुझको ही भूल गया मैं. हाँ, कौन सा ट्यून है ये? Starting little याद नहीं, काफी old है, but तुमने ही तुझको ही भूल गया मैं, प्रभु तुमने ही जन्म दिया तुझको ही भूल गया मैं. It's a beautiful line, but I don't remember कि ये कौन सा भजन है. मुझे खुद याद नहीं. 1400 भजन है, 1400 भजन में मुझे खुद पता नहीं कि कौन से भजन में कौन सा लाइन है. ठीक है. I will forward you 2 lines. I've got it in my mobile. Okay, so send it to me. We'll give it to the others later. और कुछ बोलना Ashok? नहीं sir जी, thank you. But Ashok, the greatest sin is thinking you are Ashok Nichani. Yes sir ji, right. The greatest sin. And living as Ashok Nichani. Right. Living as Ashok Nichani when you are actually SIP. SIP. You are actually SIP. But you are not living as SIP. Correct sir ji. We should realize. Yeah, you should live. You should live as SIP. Krishan. Right sir. Thank you. Thank you. Krishan. Sir, I want to add something. Yes sir. अभी आपने बोला ना पत्थर में भी वो हमें मूर्तिकार बनना है जो पत्थर में से भगवान को निकाले. हर इंसान के अंदर एक गोल्डन बुद्धा है, एक भगवान है, बट हमने उसको अज्ञानता की वजह से पाप, द्वेष, ज्वेलसी, उनका चोला पहना दिया, उनकी धूल जमा दी. उस वजह से हम स्टक हो गए एज ए ह्यूमन. मैं एक नाम में स्टक हो गया, एक इमेज में बंध गया, एक जो प्रोफाइल की वजह से उस एज ए मैनेजर बंध गया, एज ए फादर बंध गया. तो मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर जो शिप थी उसको मैं भूल गया हूँ. ठीक है, यही सबसे बड़ा पाप हर बंदा कर रहा है. और जिस दिन वो गोल्डन बुद्धा से जैसे जैसे वो धूल की परतें उतरेगी आपके ज्ञान से, जैसे आपने जो 5 मार्ग बताए, उन मार्ग से अगर ये ज्ञान की से वो धूल उतरेगी तो हमारे अंदर भी गोल्डन बुद्धा जाग उठेगा. आप गोल्डन बुद्धा मत बोलिए, फिर लोग गोल्डन बुद्धा को ढूंढेंगे. गोल्डन बुद्धा बोलो, सिर्फ बोलो. हाँ. नहीं, बिकॉज अगर शब्द ऐसे यूज करते हैं ना, फिर लोग जाके सोचेंगे गोल्डन बुद्धा चाहिए मुझे. गोल्डन बुद्धा कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो सिप हमारे अंदर है जो हम भूल गए हैं कि मैं भगवान हूँ और इंसान के रूप में जिंदगी जी रहा हूँ. वेरी गुड. तो यही तो सच्चाई है. दिस इज द बिगेस्ट सिन माय डियर फ्रेंड्स. यू नो, एंड ऑल ऑफ यू नो इट ऑन दिस कॉल. एवरीबडी इन दिस कॉल, जो आप डेली कॉल पे आते हैं, सब जानते हैं. राजेंद्र जानते हैं कि नहीं मैं सिप हूँ. You know it. You know it. We all know it. But why do we forget it? Why are we forgetting that we are SIP? We are the supreme immortal power. We are soul, spark of unique life. Not we have a soul. We are the soul. Why are we forgetting such a simple reality of life? And you see, there are many people, my dear friends, who are on this call. Many people come and tell us from many years they are going here and there. हम चारों तरफ घूम रहे हैं. हम कितने you are reading so many shastras and Gitas and all that, but you're not getting the answer, because the answer is very simple. The answer is simple. You are complicating. You are like that lady जो घर में जो वो घाघरा पहन के वो लड़की वो औरत घूम रही है, वो चाबी को ढूंढ रही है. अरे चाबी को पूरे घर में ढूंढ के थक गई. रात को उसका हस्बैंड आता है, बोलते तुम्हारे गाड़ी चाबी तो तुम्हारे घाघरा के अंदर है. तुम्हारी चाबी तो घाघरा में लटकी है मैडम, तुम कहाँ ढूंढ रही हो तुम? हिरन जैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है रे. हम प्रभु को ढूंढ रहे, प्रभु तो अंदर है. हम जाएंगे मंदिर में. अगर हम मंदिर जाएंगे तो प्रभु तो अंदर है, प्रभु कहाँ मिलेगा मंदिर में? Yes, Rajendra and Lakshmikant, are you going to cut a video? And next Lakshmikant can speak on audio if you are not coming on video. Rajendra. Shivam Guruji, sir. मैं ये सोच रहा था कि हम even we wish each other as Shivam, मैं शिवम हूँ, फिर भी हम भूल जाते हैं. हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं to live as Shivam. Why don't we prioritize it? हमारी प्रायोरिटी क्यों नहीं होती है? That is, I think, हम बहुत बड़ा पाप करते हैं.
Do you know why the reason? Do you know the reason? नहीं, I Reason know क्या? reason, क्योंकि वही अविद्या ignorance अभी भी है। क्यों? क्यों? अभी क्यों? भी क्यों? हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। क्यों? Still क्यों? mind is क्यों? controlled. क्यों? क्यों? Because of the ignorance. Because of the क्यों? ignorance. क्यों? Because we again live as a we हम आते हैं, फिर पहले हम अभी हम कॉल पे हैं, तो we live as, I think I live as हाँ, show. हमारा प्रॉब्लम किधर है Then राजन? फिर मैं भूल जाता हूँ। राजन, हमारा प्रॉब्लम किधर है? हमारा प्रॉब्लम है because we are living as a Navadwara Nagari. हमारा प्रॉब्लम Yeah. है these two eyes. ये दो आंख Senses, जो है, senses. ये बाहर देख रहे हैं, ये कान कुछ भी कोई बोल रहा है, तुम कान देते हो। ये कान। आज एक सुन रहे बकवास हैं। वीडियो, आज मुझे सुबह सवेरे एक बकवास वीडियो आया फेसबुक में। इतना बकवास वीडियो आया, आई कैनॉट, मैं मुझे बोलने को भी शर्म आ रहा है। तो वीडियो को आप लोगों को बोलने को मुझे शर्म आ रहा है वीडियो में, क्या बात थी। लेकिन the two eyes, the two ears, the nostrils, the tongue, ये जो नवद्वार है, ये बाहर देख रहे हैं। जब तक ये बाहर देखेंगे, हम तंग ही रहेंगे। You have to tame. We have not told them the story of this, the two snakes and the two rabbits, and we have to tell the story. It is when man was in silence. They say he said he was doing nothing. No, he was very busy doing a lot of work. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी भी मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, लेकिन वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है वो पक्का स्टोरी क्या है। Okay, so Rajinder, we have to tame नवद्वार नगरी। ये हमें अपने इंद्रियों को कृष्ण ने क्या कहा भगवत गीता में? कृष्ण ने कहा हमारे 5 इंद्रिय हैं। ये 5 इंद्रिय 5 घोड़े के माफिक है। ये घोड़ों को अगर हम काबू में नहीं लाएंगे, हम सारथी नहीं बनेंगे, तो ये 5 घोड़े वाइल्ड हो जाएंगे, हमें पागल कर देंगे। This is the best example of Krishna in the Bhagavad Gita. One of the best things he told Arjuna. Lakshmikant, you would like to speak, Lakshmikant ji? Hello. हाँ जी बोलिए। Sir, can I join your session, sir? आपका कोई सेशन होता है क्या मेडिटेशन का या ऐसा कुछ? हमारा तो सेशन, ये सेशन डेली होता है और मेडिटेशन हम तो 24 घंटे करते हैं। नहीं तो ऑनलाइन में कोई होता है क्या ऐसा? तो मैं आई एम इंटरेस्टेड फॉर जॉइनिंग। लक्ष्मीकांत, हम लोगों को सिखाते हैं कि मेडिटेशन करने का कोई समय नहीं होता है। मेडिटेशन करना कैसे करना है? मेडिटेशन लक्ष्मीकांत, हमें मन को छोड़ के चित्त में रहना है। जो आदमी मन से दूर होके चित्त में रहेगा, वो 24 घंटा मेडिटेशन कर रहा है। Yes, you are absolutely right. So you please come on this call every day and you please use ये call में जो आपको सीख मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, because there are many masters and many today if you are on the call, how many people have given such fantastic answers today? Yes. तो हमें क्या करना है लक्ष्मीकांत जी? Just to tell you a simple thing, meditation का मतलब ये है, जो मन है, the mind is thinking 50 thoughts a minute. हर सांस में एक नया ख्याल है, हर सांस। तो इसको करना है। थॉटलेस करना है। हाँ, कैसे शांत करना है इसको? थॉटलेस। ये कोशिश में रहिए आप। प्लीज बी इन द एफर्ट कि मन को स्थिर कैसे करना है, इसको शांत कैसे। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूं? बोलिए। क्या हम 1-to-1 बात कर सकते हैं क्या? हाँ, प्लीज टेक माय नंबर है आपके पास? नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नंबर नोट कीजिए, चैट में डाल रहा हूँ, 9845155555। प्लीज व्हाट्सएप मी 9845155555। हम चैट में डाल रहे हैं, बट यू प्लीज व्हाट्सएप में। हम हमें व्हाट्सएप करेंगे, फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। 98451 नंबर डाला है, 98451555555। थैंक यू। गणेश, और कुछ बोलना है? गणेश और कुछ बोलना है? जी सर, मैंने वो क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे नेगेटिविटी जो ब्लैक मैजिक जैसे कुछ लगता है कि कोई कुछ करता है, तो उसी से कैसे बाहर निकला जाए सर? ब्लैक मैजिक झूठ है। ये ब्लैक मैजिक तो मतलब बंदे तो परेशान हो रहा है ना सर। तो मैंने आंखों से देखा, मतलब मैं एक स्टोरी बोलूं आपको? मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, सुनिए बात। बोलिए सर। एक दिन एक आदमी, वो हमेशा ऊंट को लेके जाता था, कैमल को, और कैमल को लेके जाके जहाँ पे उसको काम था, कैमल को बांधता था, और वो कैमल उधर ही रहता था। वो पूरा दिन काम करता, फिर कैमल पे बैठ के फिर वापस जाता था।
तो एक दिन उसने रस्सी लाना भूल गया, कैमल को लाया लेकिन रस्सी लाना भूल गया। अभी क्या रस्सी करना लेना है? भूल गया। अगर अभी कैमल को छोड़ेगा तो काम किया जाएगा, तो वो रस्सी वो कैमल भाग जाएगा ना। तो वो एक वहां पे गुरुजी गुरु महर्षि खड़े हैं, वो महर्षि को बोलता है, महर्षि देखा ये रो रहा है आदमी, मुझे काम करना है, आज से नहीं तो मैं खाने में भूखा मर जाऊंगा, मुझे काम तो करना है, लेकिन कैमल को कहाँ छोड़ू मैं। तो उसको महर्षि ने सिखाया, देखो मैं क्या करता हूँ। तो कैमल के सामने जैसे रस्सी है, वो रस्सी को देखो, ओके कैमल मैं तुम्हें अभी बांध रहा हूँ, बांध के मैंने अभी तुम्हें बांध लिया, अभी बैठ जाओ, कैमल को बोलता है। तो कैमल ने सोचा उसको बांध दिया, तो कैमल बैठ गया उधर पूरा दिन। वो आदमी को बोला तुम जाके काम करो। शाम को आया, कैमल उधर ही बैठा था। अभी वो कैमल को बोल रहा है चलो चलो, कैमल नहीं उठ रहा है। तो फिर रोना शुरू किया, अरे कैमल नहीं उठ रहा है। फिर वो महर्षि वहां खड़े थे, वो बोला अभी आपने बांधा, अभी तो बांधना निकालो ना, नहीं तो कैमल सोच रहा है मैं बंधा हूँ मैं। तो फिर कैमल को बोलता है, ओके कैमल अभी मैं तुम्हारा रस्सी निकाल रहा हूँ, चलो चलेंगे। कैमल उठता है और वो चल वापस चले जाता है। ये ब्लैक मैजिक हमारे मन की बात है। ब्लैक मैजिक की कोई बाहरी बात नहीं है। ब्लैक मैजिक और हिप्नोटाइजिंग जिसे बोलते हैं, ये हमें अपने मन से ही लोग पागल करते हैं। अगर हमारा मन स्ट्रांग है, हम चित्त में रहेंगे, कॉन्शियसनेस में रहेंगे, ब्लैक मैजिक जैसे कोई चीज नहीं है। So come for the call again, Ganesh. Last question, Rajendra ji. Rajendra, last question. हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा जो हम ध्यान करना बोलते हैं मेडिटेशन, टू गो फॉर मेडिटेशन, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू बी इन ध्याना ऑलवेज, टू बी इन मेडिटेशन ऑलवेज। बिकॉज हम जब देखते हैं, अब जब काल में रहते हैं, वाकई काल में रहते हैं, वी फील दैट वी आर इन ध्याना। तो जब हम काल से बाहर जाते हैं तो हम वो लूज करते हैं। सो फिर अगर यही ध्यान में रहने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करनी है, वी शुड बी इन ध्यान। अगर कोशिश करते रहेंगे तो फिर हमें ध्यान लग ही नहीं जाता है। तो राजेंद्र, इसको बोलते हैं ना ध्यान, इसको बोलते हैं योग। तो अभी आप इस सेशन में यू आर इन ज्ञान योग, यू हैव टू बी इन योगा। योगा मींस इस सेशन के बाद में जब एक सेशन खत्म होता है, भोगा में मत डूबो। ये सेशन के बाद शांत में रहो, ध्यान योग में रहो। फिर कुछ कर्म योग करो, फिर कुछ भक्ति योग करो, फिर प्रेम योग करो। Be in the cycle of yoga. If you are in the cycle of yoga, so everything is executed. So everything of जो भी हम करेंगे, that should be executed yoga. Always be. Then it should be only yoga. Always be united. Surrendered. Always be united. United and surrendered. छोड़ू ना मैं उसका हाथ, वो है मेरे भोलेनाथ। छोड़ू ना मैं उसका हाथ मत छोड़ो, सिप को मत छोड़ो। Our greatest sin, Rajendra ji, our greatest sin is living in bhoga when we should live in yoga. Our greatest sin is living as man when we are God. Being in yoga means being sip. Remember, don't be human, be divine. You are divine. Why are you stepping down? Why are you downgrading yourself? You are downgrading yourself and being human. Upgrade yourself and be divine. With folded hands, I bow down to you.